Okay, so hello everyone, I'm Sudipta Simran Ponda welcoming you all to Vedang Teachings powered by Vedang Institute of Technology. How are you everyone? केमिति सब अच्छा preparation केमिति तम मानकर चली ची ये बोलिस गुड मॉर्निंग एलिना गुड मॉर्निंग लिपिना गुड मॉर्निंग आरती गुड मॉर्निंग कैलाश समस्त को गुड मॉर्निंग ओके तो टिके जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जा सो दैट हमें क्लास स्टार्ट कर देबा जेंति कि जियोग्राफी सेशन हमर चली ची जियोग्राफी इटसेल्फ ए वास्ट टॉपिक फॉर ऑल द टीचिंग एस्पिरेंट्स से लगी जियोग्राफी ऊपर टिके हम अधिक फोकस करूछे ओके तो चलंतु देखिबा फर्स्ट थिंग आपण मन को रखुची जदि आपण माने प्रिपरेशन करूछन वन डे एग्जामिनेशन पई ताहाले आपण माने महापैक नै परिबे 4000 रुपीस रे जहार वैल्यू होची 2 इयर्स पई एंड ए 2 इयर्स भीतर जत्ते वन डे एग्जामिनेशन अछि सब आपनकर कवर अप हेचिबो एल्स आपण माने एसएसबी टीजीटी पई प्रिपरेशन करछन द्रोण बैच नै परिबे 1 इयर वैलिडिटी सहित 1499 होची प्राइस प्रारंभ बैच नै परिबे जेटीएटी पई 1 इयर वैलिडिटी सहित 1199 होची प्राइस संस्कृत स्पेशल पेड कोर्स पे आपण नै परिबे 1499 होची प्राइस 8280532825 को आपण माने कॉल करी कि आराम से बैच परचेस करि परिबे लेट करी कि जीवा फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन कोन कहूची ना द मस्करीन हाई कोन कहला ना मस्करीन हाई दैट क्रुशियल फॉर ए स्ट्रांग इंडियन मानसून तो मस्करीन हाई कोन ना जोडे कि आपनकर गोटे इंडियन मानसून आसीबार मुख्य कारण बाह करे so is a high pressure cell located near तो एटा आपण माने देखिबा को कोठी पाउचंती मते के कहि परिबो गुड मॉर्निंग निर्मल आंसर मते टिके दियो राइट आंसर कोन हबो के कहि परिबो द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एठी पचारि छी आपनकर कोन ना इंडियन मानसून ताहाले ऑस्ट्रेलिया सहित रिलेशन किछि अछि कि नो चाइना सी सहित किछि रिलेशन आसीबो कि बिल्कुल नाही गल्फ ऑफ एडेन सहित किछि आसीबो कि नो तो रहिला कि आपनकर जदी एलिमिनेशन प्रोसेस रे भी गले ते इंडियन मानसून कथा पचाछि माने अदर कंट्रीज मानु का आपण माने आराम से एलिमिनेट करि परिबे हो ना नाही मते खाली खुओ यस और नो यस तो बट एठी जो ऑस्ट्रेलिया आसुची एठी आपण माने एल निनो को रिलेट करई परिबे ठीक अछि चलो नेक्स्ट सो एटा आपनकर जो कोन रहउची ना माडागास्कर इन द साउथ इंडियन ओशन रहउची दिस इज अ सेमी परमानेंट हाई प्रेशर सेल कोटी ना माडागास्कर रे आपण देखा जाय को सीजन ने ना बेसिकली आपण मानकर समर सीजन रे को सीजन रे ना समर सीजन रे आपण मानको देखिया को मिलियो क्लियर चलो नेक्स्ट जोथरे आपनकर लोअर प्रेशर पुश हेकी रहिबो आपनकर पुश करके रखिबो कोन ना मॉइस्चर को एंड लैडन एयर को अक्रॉस द इक्वेटर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ना कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इक्वेटोरियल इंडियन ओशन मानसून इक्वेटोरियल इंडियन मानसून को आपनकर डिस्क्राइब करता करूची जोटा को हमें इक्विनो बोली के जानि छे क्विक जोटा को हमें इक्विनो बोली जानि छे गाइस क्विक कौन हम राइट आंसर यार इक्विनो कहले इक्वेटोरियल इंडियन ओशन मानसून को हमें इक्विनो बोली जानि छे ता माने हमें रिलेट ताको कहा सहित करबा पैसिफिक ग्रेडियंट सहित बिल्कुल करबानी पैसिफिक ग्रेडियंट सहित आपण माने कर द टेंपरेचर ग्रेडियंट बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक कहूची दैट मींस आपण कर कोन ना इनसो रिलेट करबा कहा को ना एल निनो इफेक्ट को ये रिलेट करिवो सो ये तो आपनकर बिल्कुल हबनी देन देछि एन इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग द एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट ऑफ द इंडियन ओशन डाइपोल तो राइट आंसर कौन है जाउची मैम स्लाइड प्लीज अच्छा सॉरी साइड प्लीज साइड ही जाइछ ओके मैथम देखो यार आंसर कौन कहूची ना एटमॉस्फेरिक आईओडी दैट मींस दैट मेजर्स द क्लाउड कवर and the wind difference between the western and eastern Indian ocean the both eastern and western सेति पई डाइपोल ताको हुआ जाई छी ओके देखि सी ऑप्शन देछि कोन ना लोकलाइज्ड साइक्लोन इन द लाक्षाद्वीप सी रे आपनकर बहुत ही स्मॉल स्केल रे आपण माने देखिबा को पाई परिबे लोकलाइज्ड साइक्लोन ओके जोटा कि आपण माने कहि परिबे इक्विनो आपनकर बहुत ही लार्ज स्केल क्लाइमेट इंडेक्स रे पळेबो देन पचाछि द सीजनल शिफ्ट ऑफ द ट्रेड विंड्स ऑफ द अटलांटिक कहले भी आपनकर कोन ना रेफर टू द अटलांटिक इक्वेटोरियल मोड ओके एठी पचारिछि इंडियन ओशन मानसून तो दैट मींस इट इक्वेटोरियल जीवो इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग एटमॉस्फेयर बोथ एंड ईस्टर्न ओशन नेक्स्ट क्वेश्चन मते यार आंसर दियो कि द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट ओवर व्हिच वाटर बॉडी तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपनकर जेबे हुए ये आपनकर को
origin हबो को वाटर बॉडी रु मते कहि दियो जल्दी बी पक्का बी हाँ हाँ गुड मॉर्निंग सर एंड मैम आसो तो कास्पियन सी आपनकर कोन पे हबनी बिकॉज़ दिस इज द सेकेंडरी सोर्स वेयर आपनकर स्टॉर्म आपनकर क्रिएट हेताय पिकअप निये एक्स्ट्रा मॉइस्चर ओहना नहीं एंड इंडियन ओशन को आपनकर एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रोवाइड करे बट दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट रीजन बट मेडिटेरेनियन सी को हमें रिलेट कर पारिबा व्हाई बिकॉज़ दिस इज द प्राइमरी बर्थ प्लेस ऑफ दीस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रेड सी हेले में कोन कहूचे ना ये भी आपनकर सम माइनर मॉइस्चर कंटेन करिवो हना नहीं अरेबियन सी हेले ताको भी हम कहि पाछु ये समर मानसून को पड़ेबो अरेबियन सी हेले समर मानसून को ये पड़ेबो सो राइट आंसर मेडिटेरेनियन सी नेक्स्ट कहछि व्हाट हैपेंस टू द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग द समर सीजन इन इंडिया क्विक कोन हबो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपण माने एस टी डब्ल्यू जे को सुनी थिबे आंसर मी क्विक मैम केते बेले स्टार्ट हैला कि 30 प्लस क्वेश्चन सरिलानी स्टार्ट हे गलानी बा 8 रु स्टार्ट हैलानी अरे प्रीवियस क्लास रे क्लाइमेट ऊपर 30 टा क्वेश्चन हेथिला सेथि लागि नेक्स्ट क्लास रे मु 60 टा क्वेश्चन टोटल बनै देथिली सेथि पय 30 टा प्रीवियस क्लास रे करछि एबे 30 टा करछि हैला माधव हां रूपाली तुमको भी हाट आसा तमरे को व्हाट हैपेंस टू द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट एसटीडब्ल्यूजे जोटा को मु तमन को कहूची दैट व्हाट डज इट मीन क्विक जेते बेले कहूची इंटेंसिफाइज ओवर प्लेन दैट माने कोन हबो ना इट इंटेंसिफाइज ओवर द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स माने कोन ना इट हैपेंस ओनली इन द विंटर सीजन रे एंड एटी पचाची समर सीजन कथा सो इट सिट्स द साउथ ऑफ द हिमालय को जदी हमें पळौचे ये भी आपनकर विंटर सीजन रे हबो माने विंटर सीजन रे हबो मूव्स टू द नॉर्थ को जदी हमें जिबा ताहाले माइग्रेट करिवो नॉर्थ हिमालयस को एंड क्लियर्स करिवो वे को ऑफ द मानसून्स ऑफ द एंटर करिबा को इंडिया रे सो इट विथड्रॉस फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड मूव्स नॉर्थ ऑफ द हिमालयस एंड क्लियर द वेदर टू एंटर द मानसून टू द इंडिया ओके बुझी पारला ना नहीं मते को एंड इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन टू बिकम एन ईस्टर्ली ये रिवर्स करिवो कि ये आपनकर डिस्क्राइब करछि का को ना ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट को एटा में कोन कहूचे ना सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट जदि आपनकर रिवर्स कथा कहूची ताहा रिलेट करे परिबे का को ना ट्रॉपिकल वो आपनकर ईस्टर्ली जेट को रिलेट करे परिबे नेक्स्ट द हीट लो that develops over Pakistan and northwest India during summer is technically a कौन पचारि छी क्विक मते यार आंसर दियो हीट लो होची माने कोन ऑब्वियसली जते बेले हीट लो होची दैट मींस आपण माने रिलेट करै परिबे थर्मल लो को हरा नहीं मते को सो थर्मल लो कथा पचारुची माने आपण माने फर्स्ट ऑप्शन देछि डायनामिक लो सता जिबे कि डायनामिक लो ऑलवेज कॉज्ड बाय द एयर मोशन और हमें कहि परिबा एयर रोटेशन पाई हुए लाइक जदी मिड अल्टीट्यूड और द मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स रे आपनकर हुए जोटा को हमें कहूचे कोन ना मोशन और रोटेशन ऊपर ये आपनकर डिपेंड करे जदी थर्मल लो कथा पचाची ताहाले डिपेंड ये काहा को करिवो ना ये कोन करिवो ना थर्मल लो ही आपनकर कॉज करिवो स्ट्रिक्टली जदी कहबा फ्रंटल लो ये कॉज करिवो कोन ना मीटिंग ऑफ द हॉट एंड कोल्ड एयर मासेस रेयर जोटा कि आपनकर इंडियन समर से देखा जाय जोटा कि बहुत ही रेयरिस्ट देखा जाय इंडियन समर से जोथरे आपनकर कोन ना कोल्ड एयर मीट करिवो हॉट एयर सहित then as the orographic low what does it mean by the orographic low माने हमें कौन कहि परिबा ना it caused by the air being forced over the mountains that means mechanically हमें कौन कहि परिबा ना hot temperature based जते बेले कोनोसी माउंटेन को आपनकर पवन आसुची एंड बाजी की पूर्ण रिटर्न आसुची दैट प्रेशर को हमें ओरोग्राफी माने आपण माने जानू संगे माउंटेन रिलेटेड विथ व्हाट ना माउंटेन माने आपण माने जानि देबा कथा हैला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूची ना which of the following areas receives the least rainfall from the Arabian Sea branch of the monsoon Arabian Sea branch of the monsoon कहले कौन पूछिबो क्विक
Arabian Sea branch, that means Arabian Sea branch rainfall monsoon माने कौन rainfall तो मते कुह western घाट को हमें relate करे परिबा western घाट receive करछि कोन extremely high rainfall due to what ना due to the orographic lifting एठी आपण कोन ना mountains अछि तो एठी हमर कोन extremely high ये experience करिवो extremely high rainfall yes or no tell me जदि पचारिबो गुजरात कोस्ट कहले ये आपण को रिसीव करछि कोन मॉडरेट रेनफॉल दो वेरी लेस बिकॉज़ सेठी आपण को अधिक घाट्स देखिबा को नाही सो इथे हमें कहि परिबा मॉडरेट बट ईस्टर्न घाट आपण को कोन करि परिबो बी हबो ना ईस्टर्न घाट हबो रिसीव द लीस्ट from the branch because they lie in the rain shadow zone ये आपणकर कोठी रहुची रेड शैडो जोन रे रहुची दैट्स व्हाई हमें कहि परिबा कि ईस्टर्न घाट आपणकर कोन रादर दैन द वेस्टर्न घाट आपणकर रेन शैडो जोन रे जेतु रहुची तो ये आपणकर एक्सपीरियंस लो करूची लिस्ट एक्सपीरियंस करूची घाट मानक भितरे ओरोग्राफिक रीजन मानक भितरे माउंटेन्स मानक भितरे इट रिसीव्स द लीस्ट फ्रॉम द ब्रांच because they lie in the rain shadow zone and rain shadow area of the western ghat most of the rain comes from the Bay of Bengal branch okay जोटा कि retreating monsoon बोली आपण माने जानि छथि मालाबार कोस्ट कहले ये one of the fast and heaviest rainfall zone in India मालाबार कोस्ट आपनकर कोन हुए ना सबटु हेवी रेनफॉल हुए आपण माने फास्ट रेनफॉल कोउठी एक्सपीरियंस करा जाउछि इंडिया रे मालाबार कोस्ट रे plus this is the heaviest one है ना next मते को the Bardau or the Bordisila the Bardau or the Bordisila is a pre-monsoon thunderstorm specific to which state it is quick leeward side and rain area yes B Malabar Goa Kerala yes कालिया मते गुह जते बेले कहूची बडोइसिला दैट मींस आपनकर प्री मानसून थंडरस्टॉर्म पळे आसीबो हो ना तो ये आपनकर कोठी रिलेट करिबा वेस्ट बेंगल एंड ओडिसा रे तमान को रिलेट करिथिली का सहित ना वन एंड ओनली काला बैसाखी सहित आपण माने रिलेट करिबी काला बैसाखी सहित आसाम को कोन रिलेट करथिली ना लोकलाइज्ड हाई वोल्कासिटी आपण माने कहउसंती और हमें कहि परिबा लोकलाइज्ड द एयर अधिक माने हाई वेलोसिटी आपण रहिबो विंड्स रो एंड रेन आपणकर एई जगह रे कहै जाय कोन ना तार ना रहउची बडोइसिला केरला हेले आपण मान को कोन कहितली केरला रे आपणकर जो लोकल रहउची तार ना कोन कहितली दैट इज कॉल्ड एज मैंगो सावर होना नहीं नेक्स्ट चलो मते को व्हाई डू द Andaman and Nicobar Islands receives rainfall almost all year around Andaman and Nicobar Island को जदि हमें कंसीडर करूछे ना Andaman Nicobar Island रे वर्ष सारा आपण माने वर्षा देखिया को पाइबे तो रीजन व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट क्विक गुड मॉर्निंग प्रियव्रत को मते राइट आंसर कोन हबो हाई माउंटेन्स पई हबो की देखो हाई माउंटेन्स ता आपनका अंडमान निकोबार रे प्रेजेंट अछंती बट दे आर नॉट ऑल इनफ टू कॉज द ईयर अराउंड रेनफॉल so year around rainfall कोथि पई हबो ना because due to their proximity to the equator and the influence of both monsoons that means कोन ना the equatorial location गोटे प्रोवाइड करूची conventional rain को and they are hit by both the साउथ वेस्ट एंड रिट्रीटिंग जदि गोटे आपनकर जेमिति इंडिया को आपनकर रेन आसुची केमिति साउथ वेस्ट रेन आसुची तो जदि साउथ वेस्ट आसीबो एंड रिट्रीटिंग भी आसीबो जोटा कि नॉर्थ ईस्ट भी आसीबो ताहाली इंडिया रे भी हमर वर्ष सारा सब आपनकर सब स्टेट रे वर्ष सारा हबो काहे कि होउनी कारण ओनली साउथ वेस्ट आसुची रिट्रीटिंग आपनकर आसुनी तो साउथ वेस्ट सहित जदि रिट्रीटिंग आसीबो ताहाले वर्ष सारा रेन हबो जेमिति कि अंडमान निकोबार रे होउची एते कि बुझी पारलो साउथ वेस्ट प्लस रिट्रीटिंग आपनकर कोन आसीबो साउथ वेस्ट प्लस रिट्रीटिंग हैला एंड रिट्रीटिंग टाको हमें कोन ना नॉर्थ ईस्ट बोली कहूचे नॉर्थ ईस्ट मानसून हैला
एंड वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये आपनकर नॉर्थ इंडिया को माने माने कोन जहाँ भी इंपैक्ट पकोछि नॉर्थ इंडिया को इंपैक्ट पकोछि नॉट द बे ऑफ बंगाल कोन आइलैंड मान को करूनी नेक्स्ट लू विंड्स आपन माने जानि संती ड्राई विंड्स नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को हम रिलेट करूछे next in which month does the retreating monsoon typically begins it withdrawal from northwest india ru आपनकर को टाइम रे मते कुह कि retreating monsoon टाइम हटुची आसुची को begin होची केबे अर्ली अगस्त रे हबो कि monsoon जते बेले retreating जीवो that means हमें कोन कोन परिबा ना हटिबा कंडीशन रे पळे आसीबो withdrawal कंडीशन रे पळे आसीबो withdrawal typically begins from the northeastern state of Rajasthan around को मासरे आसीबो को मासरे ना अर्ली सितंबर रे ये आसी जीवो ऑप्शन बी अक्टूबर किए मारला अक्टूबर केमिति हबो by October by this time हमें कहि परिबा the monsoon has actually left आपनकर northern and central India रे present थाए highly present थाए हैला हां नेक्स्ट मते को which region of India is most susceptible and late frost which impacts horticulture quick को मते susceptibility to आपनकर late frost कथा कहूची what is it आको फर्स्ट कहि ऑप्शन तापर हम कहि त मानको late frost कोन कहूची फर्स्ट थिंग कहूची नीलगिरी आपनकर नीलगिरी एक्सपीरियंस करूची frost को but it's less frequent than in the northern side नीलगिरी भी एक्सपीरियंस करूची frost but northern side जदि हमको कहूची हमें रिलेट कहा सहित करे परिबा ऑब्वियसली नॉर्थ को पूरा नॉर्थ को पड़ाओ ता माने कोन रिलेट करिबो ना हिमालयन वैली को ही रिलेट करिबो these are the most susceptible and cold air आपनकर सेटल डाउन हे जानती वैली से that's why आपनकर टेंपरेचर इनवर्सन देखा जाय and ये डैमेज करे कहा को ना हॉर्टिकल्चर को सम लाइक अपन रिलेट कर परिबे नॉर्दर्न साइड रे एप्पल आपनकर बढ़िया हुए आपनकर एप्रिकॉट्स बढ़िया हुए तो एई मानु को सब कोन डिस्ट्रॉय करिबारे से लागे क्लियर चलो नेक्स्ट मते को इन कोपेन्स क्लासिफिकेशन द लेटर w in aw or cwg stands for w माने कोन एमिति पछादिबो क्वेश्चन रे लिखि कि रख गुड मॉर्निंग सागरिका जल्दी यार कोपेन्स classification according w for what w for कोन winter rainfall w for कोन dry winter season w for कोन wet winter season or western disturbance देखियो केतन राइट आंसर माच सी wet winter season मु जानछि त माने एमिति w देखि कि मारिबो wet winter season को स्पेसिफाई करा जाईछि context like mediterranean that means हमें कोन कर परिबा याको स्मॉल s रे सिंबलाइज करा जाईछि W for dry winter season. W for dry winter season in the AW or CWG. Clear? एतिकी जिनसा winter rainfall हेले अपन मानकर कोन summer dry और हमें कहि परिबा that would amplify in the winter rain. Okay, ताकू रिलेट करे परिबा जेते बेले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहूची ता पय आपण मानकर बेसे स्मॉल s भी आपनकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पय भी यूज करा छै बट ड्राई विंटर सीजन आपनकर AW और द CWG पय यूज करा छै क्लियर चलो which climate type is characterized by CWG in India CWG in India जेते बेले कह जाउची कोटा कैरेक्टराइज करा जाय छी के मते कहि परिबो क्विक yes dry winter मते को CWG क्लाइमेट टाइप को अपन माने रिलेट करे परिबे कहा सहित ट्रॉपिकल साबन्ना हेले कोन कहितली ट्रॉपिकल साबन्ना हेले ओडिसा रा टाइप AW को रिलेट करैबो होना नै मते को मॉनसून विथ सॉफ्ट ड्राई सीजन को अपन माने कोन रिलेट करे परिबे ना आकु अपन माने AMW को रिलेट करे परिबे मॉनसून टाइप विथ सॉफ्ट ड्राई सीजन AMW जोटा कि आपनकर मालाबार कोस्ट बिलोंग करूची देन रहिला कोन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल ताहाले कोन याको हम रिलेट करे परबे कि इंडो गैंगेटिक प्लेन रे CCC B9C बहुत ढाबा बाडौछ सेति टिके बाडो बहुत ढाबा बाडौछ तो C माने कोन कहूची ना जेते बेले CWG कहिची C स्टैंड्स फॉर व्हाट ना C आपन मानकर वार्म टेंपरेचर को बुझौची W आपन मानकर ड्राई विंटर को बुझौची G फॉर द गैंगेस G for the Ganges temperature हैला ताको अपन रिलेट करे परिबे इंडो गैंगेटिक प्लेन सेमी एराइड स्टेप हैला अपन माने कोन कहि परिबे एटा को B
BSHW BSHW को रिलेट करे परिबे सेमी अराइड स्टीप को HW हे गले अपन माने SH को पळेले अपन माने अराइड मरुभूमि की पळेबे नेक्स्ट मते को एठी आसिला BSHW कहितली एबे BSHW क्लाइमेट टाइप सेमी अराइड स्टेप द मोस्ट प्रोमिनेंट फाउंड इन ये कोठे अपन माने देखा जाए कि मते कहि परिबो BSHW कोठे देखा जीवो रेन शैडो जोन नहीं देखा जीवो जोठी वर्षा नथिबो अपन माने दैट मींस अपन कोन कोठे रिलेट करिवे अपन माने पार्ट ऑफ कर्नाटक है महाराष्ट्र है आंध्र प्रदेश है एंड सम ऑफ रिलेट हाँ कोंकण तो नहीं सुंदरबन नहीं अरुणाचल प्रदेश हबनी रेन शैडो जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट को ही रिलेट करेबे डेजर्ट डेजर्ट माने ऑप्शन कहबो ना और डेजर्ट कहले कोन हबो ताले मते ते कहलो अरुणाचल प्रदेश रे आपनकर को जोन देखा जीवो अरुणाचल प्रदेश रे आपनकर को जोन देखा जीवो DFC stands for the cold humid winter with short summer कोंकण कोस्ट कहले कोडे जीवो ना ए जो AMW पढितिलो ए AMW आपनकर कोंकण कोस्ट जीवो सुंदरबन हेले ये ओनली आपनकर कोन AW जीवो सावन्ना टाइप ओके ट्रॉपिकल सावन्ना नेक्स्ट मते को अकॉर्डिंग टू द त्रेथा क्लासिफिकेशन द मेजॉरिटी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फॉल्स अंडर त्रेथा संग्रह को मते त्रेथास करो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग आपनकर मोस्ट ऑफ द इंडिया पेनिनसुलर इंडिया आपनकर को लाइक अंडर रे जाउची ए आपनकर AW कहले आपण जानिचे सावन्ना टाइप हो ना नहीं तो इंडिया रा टोटल मेजॉरिटी हमें कोन कहूचे ना सावन्ना टाइप कारण ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हेले ए नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को हम रिलेट करे परिबा यदि सब ट्रॉपिकल स्टेप कहूची ताहाले हमें ताकू रिलेट करे परिबा का सहित सब ट्रॉपिकल कहले BSH कहतिली ये नॉर्थ वेस्टर्न सहित रिलेट करे परिबो शैडो सहित ह्यूमिड मेजोथर्मल कहले आपण माने कोठी आको ना ये ओनली नॉर्दर्न प्लेन रे आपण माने आको देखि परिबे ओनली नॉर्दर्न प्लेन रे जेते बेले आपण मानकू कहिची कोन कहिची ना अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल्स क्लासिफिकेशन ताहाले टोटल इंडिया को आपण मानकर सावन्ना टाइप रे क्लासिफाई करा जाई छ ना नै क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट लागुची लिपन साहू केते इजी क्वेश्चंस करिबा टिके त डिफिकल्ट लेवल को जिबा ना सब बेले खाली इजी क्वेश्चंस करूथबा कि मिसी की करिबा ना न हले तो एग्जाम रे डिफिकल्ट पकेबो तमन तो किछ करि परिबनी कहबा हम एते प्रैक्टिस कलु मैम को क्लास रे क्वेश्चन आसिलानी हो ना नेक्स्ट कहै व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट डिटरमाइन द एएस हेले अपन को ट्रॉपिकल मराइन हमें ताको कहूची AW हेले ट्रॉपिकल सावन्ना तो एठी क्लाइमेट ऑफ द तमिलनाडु कोस्ट कथा कहि देछि राइट आंसर कोन होबो देखा मते कहिलो तमिलनाडु कोस्ट कहली ये तो रेन शैडो ऑफ वेस्टर्न घाट बिल्कुल हबो नाही दिस इज अ फैक्टर जे कि आपनकर तमिलनाडु को ड्राई रखे ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मॉनसून समर टाइम रे बट एबे पचारिछ आपनकर कोन ट्रॉपिकल मराइन क्लाइमेट तमिलनाडु कोस्ट एग्जैक्टली कोन हबो ना आपनकर हाई अल्टीट्यूड ऑफ ईस्टर्न घाट हबो हो ना नहीं दिस इज नॉट अ मेजर फैक्टर कोडा आपनकर हबो ना एगुडा सब आपनकर रिलेट करूची व्हेयरएस रिट्रीटिंग मॉनसून आपनकर मेजर फैक्टर नु ईस्टर्न घाट को रिट्रीटिंग मॉनसून अटैक करूची हो ना नेक्स्ट तो अगेन कहूची जदि आपण माने ओडिसा टीचिंग एग्जामिनेशन पे प्रिपरेशन करूछंती द्रोण बैच को जॉइन होंते एसएसबी टीजीटी रो या फिर प्रारंभ बैच जेटीएटी पे या फिर संस्कृत बैच एसएसबी टीजीटी रो नै पाइबे ठीक है जी रेस्पेक्टेड प्राइसेस एंड द हेल्पलाइन नंबर मेंशन करा जाय नेक्स्ट मते को द फेनोमेनन ऑफ अर्बन हीट आइलैंड्स जोटा को UHI हमें कहूचे इन इंडियन मेट्रोस इज प्राइमरीली it is caused by न्यू लागुची सब क्वेश्चंस न्यू लागुची आ टिके इजी लेवल ला क्वेश्चन आनिबा कोन कहउछ लिपन प्रियव्रत आ टिके इजी लेवल क्वेश्चन आनिबा तो 46 बी एलिना पात्र बी हबो कि मैम ना जिबा कि मैम लिखिछो बी हबो कि मैम लिखिछो ना जिबा कि मैम लिखिछो कोन लिखिछो ना ठीक अछि अच्छा हो रुपाली देखो सो अर्बन हीट जेते बेले आपन को आइलो अर्बन हीट आइलैंड कथा कहूची दैट मींस हमें रिलेट करेबा आ सहित प्रॉक्सिमिटी टू द सी हबो कि एटा एक्चुअली आपन कर हेल्प करे moderate temperature मानुकु through the land and the sea breezes but the massive concrete surface and lack of vegetation जोटा कि आपन घर आइलैंड कथा कहूची अर्बन कथा कहूची एटा आपन घर कोन गोटे टाइप रा कंक्रीट असल्ट
and dark groups absorb करी दिए जेते भी retain heat को आसे, while the lack of the trees prevent करे जेते cooling through the evaporation. तो आमे कहि परिबा evapotranspiration को कोन ना ये cooling करिबारे हेल्प करे हाँ ना नहीं. तो हाई रेनफॉल हेले हमें कौन कहि परिबा ना जनरली आपण करा रेनफॉल टाइम रे तो सरफेस पूरा कूल डाउन हे जिवो. यूज ऑफ द ट्रेडिशनल कोन चूलास इन रूरल आउटस्कट ये आपण कोन करिवो ये आपण ब्लैक कार्बन क्रिएट करिवो. ये कंट्रीब्यूट करूची एयर पोल्यूशन को जदी हमें चूला यूज करूचे ताली आपण कोन करिवो कोन मते चूला को ब्लैक कार्बन आपण आसीबो जोथिरे आपण कोन पोल्यूशन बढ़ी बढ़ी चलीबो. नेक्स्ट मते कुओ cloud bursts are most frequently reported in which Indian geographical zone? को geographical zone रे अच्छा इजी टू हार्ड एटा तमरा मॉडरेट टू हार्ड हे जाइछ ना हो आसो नेक्स्ट थर देखिया मते कुओ cloud bursts are more frequently cloud bursts आपनकर more frequently reported in which Indian geographical zone कोठी आसीबो third desert रे आपण कोन कहि परिबा that is very rare due to why because of lack of moisture and low handling clouds. So third desert रे because of lack of moisture so it is not possible. The Himalayan region को हमें कौन relate करी परिबा because cloud bursts are most common here because of the steep mountains force and the moisture laden more in rather than the third desert or other options. The coastal plains हेले हमें कौन कहि परछे हाई एक्सपीरियंस करूची heavy rain but rarely in the specific burst आपनकर वृष्टिपात बहुत कम देखा जाए. The Deccan Plateau, the Deccan Trap कहले generally receive करूची seasonal monsoon rainfall not all around the year है ना not frequent. Next मते को what is the impact of the black carbon जेटा कि aerosols हमें कहउचे on the Indian monsoon. Black carbon रो कोन impact रहउची के मते कहि परिबो black carbon रो कोन impact रहउची quick लिपन प्रियव्रत निवेदिता कालिया एलिना quick मैम एसएसपी रे ए टाइप रो क्वेश्चंस आसीबो कि यस आज्ञा आसीबो बोली तो आनिची क्वेश्चंस नहले काई आनी थांती आसीबो ए टाइप रो ही क्वेश्चंस आसीबो. जियोग्राफी रो टिके हार्ड लेवल रो क्वेश्चन आसे सेथि लागि हमें प्रैक्टिस करूचे सब बेले त मानको इजी क्वेश्चंस करेबी जदी एग्जाम रे त आसीबो डिफिकल्ट त माने भाबिबो इजी एथि पे करूची कि त मानकर बेस गोटे बनी जाऊ जियोग्राफी रे कि त माने डरी बनी कि जियोग्राफी रे कोठु भी क्वेश्चंस आसु इजी टा को आगो कवर अप करबा तापरे मॉडरेट को तापरे टिके हाई हो जबा होना नहीं. तो इम्पैक्ट ऑफ द ब्लैक कार्बन हमें कौन रीड करि परिबा ऑलवेज इंक्रीज करूची रेनफॉल को एटा होना नहीं मते को ये रेनफॉल को डिस्टर्ब करि दिए ये रेनफॉल को डिस्टर्ब करे रेन पैटर्न को डिस्टर्ब करे. तो हिमालयन मेल्टिंग एंड हीटिंग एटा को हमें जाय परिबा इट कैन लीडिंग टू द मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स एंड अल्टर हीटिंग पैटर्न्स को होना नहीं मते को जोटा को हमें कौन जानचे जोटा कि ब्लैक कार्बन सेटल्स ऑन द स्नो and lowering its albedo जोटा को albedo माने कोन कहूची कहलो ए जो albedo वर्ड ता माने मते की कहि परिबो कोन क्विक what does it mean by albedo नाटा reflectivity हैला then it prevents the formation of the cyclones in the Bay of Bengal. नेक्स्ट मते को द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट जोटा को एनएपीसीसी बोली हमें जानि छी मैम ऑप्शन बड़ हे जाई छी बोली हमें बड़ देखी कहि दउ छु ऑप्शन छोट करिवे अच्छा अच्छा हो द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज एनएपीसीसी एटा आपनकर केबे चेंज हेची मते को द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन व्हिच ईयर केबे एटा इंडिया रे लॉन्च हेतिला क्विक 2005 रे हेतिला कि 2008 रे 2012 2015 रे केबे हेतिला सी 2012 रे त मानकर हेतिला हां 2012 रे आपनकर एंड ऑफ द 11th 5 ईयर प्लान 11th फाइव ईयर प्लान एंड हेच 2008 रे आपनकर आरंभ हेच केबे बी बी
2008 रे NAPCC was launched in June 30 2008 with the 8 कोन national mission हैला focusing on what NAPCC रे आपनकर solar mission focusing on the solar mission. Okay, solar energy, water, agriculture, forest, yeah, solar, water, agriculture, सब लिख दो water, that means irrigation, है ना नहीं? Soil, forest, agriculture, soil मैंने तो agriculture और soil मैंने कौन relate करेंगे, है ना? Next. मते को which Indian state has the highest frequency of tropical cyclones making landfall? Quick year answer के दबो. Sorry ma'am, एलिना कौन है एलिना? एलिना नारू मोर मने पड़िला मु लास्ट जाइथिली केबे आई थिंक गुरुवार दिन जदना सुदशा प्रथा हिथिला से दिन मु जाइथिली एलिना हब गोटे भुवनेश्वर रे अछि जतरे मस्त वाला पखाळ दिए त म एलिना हब जाइथिली पखाळ खाइबा पई एलिना सेटा तम वाला रेस्टोरेंट की एलिना हब एलिना सेटा तमर की अच्छा रॉन्ग आंसर देथिला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन एठी पचरा जाइछि महाराष्ट्र केरला ओडिशा और गुजरात महाराष्ट्र में जानछे एक्सपीरियंस करूची बहुत ही फ्यूअर साइक्लोन्स तो जते बेले साइक्लोन कथा आसुची ओडिशा को छाडी कि त माने अलगा कोडे जाई परिबो की साइक्लोन कथा आसिले ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बे ऑफ बंगाल ओडिशा रो कर्व्ड कोस्ट लाइन पाई ओडिशा को ही हिट करे दैट इज द कोन कहया कोले बिकॉज़ ऑफ द कर्व आपनकर कर्व्ड कोस्ट लाइन मैग्नेट भले से टाणे आपनकर साइक्लोन होना नहीं चलो नेक्स्ट मते को द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जोटा कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट passes through Mirzapur which is the relevant to climate studies over what quick climate studies ऊपर को जल्दी पिला सब कोडे जाउछंदी कि रे कोन एते कम पिला आछंदी क्लास को जाउछंदी कोडे सब पिला लाइक सब क्लास रे करो एंड देखे केते जण पिला प्रेजेंट थिले समस्त लाइक करो दैट लिस्ट कौन हम राइट आंसर पचाची द स्टैंडर्ड मेरिडियन जोटा हमें कहूचे आईएमडी ओके सॉरी आपनकर हां आईएमडी द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया passes through Mirzapur which is the relevant to climate studies to it marks the boundary of the monsoon it marks karibo ki no it is used in a reference point to the local solar radiation no it has no direct relation to the climate only the time zone only आपनकर IST it is primarily purpose आपनकर थाए कोन ना to define करिवो Indian standard time है ना and quiz climate आपनकर माने डाटा रिकॉर्ड ए सब स्टेशंस along with the meridian सहित ये प्रेजेंट रहबो क्लियर नेक्स्ट मते कुह the break in the monsoon is often associated with the movement of quick कौन पचाची ना ब्रेक कथा पचाची break in the monsoon is often associated with the movement of what जल्दी आंसर समस्त लाइक करो जो माने भी क्लास रिप्रेजेंट अच्छो डू लाइक the break in the monsoon is often associated with the movement of कहा द्वारा हबो देखो जेट स्ट्रीम टू इक्वेटर मु तमानु कोन कहतिली ना जेट स्ट्रीम जते बेले आसीबो से आपनकर नॉर्थ ऑफ द हिमालयस रिप्रेजेंट रहइबो ड्यूरिंग द monsoon जते बेले कहूची द monsoon draw to the foothills of the Himalayas ताले aqua में रिलेट करि परिबा ना नहीं मते को normally the monsoon hill जोटा कि आपनकर लो प्रेशर एक्सिस रे बिलोंग करूची that sits over the Indo-Gangetic plain and when it shifts to the north toward the Himalayan foothills ताले आपनकर रेन स्टॉप हे जाय over the plain को जते बेले से टच करे but increase करे significantly पुनी कोठी ना जते बेले पुनी माउंटेन को जाय हैला तो नॉर्थ ईस्ट सहित आपण माने को रिलेट करै परिबे हैला चलो ITCZ to the Indian Ocean या सहित कोन रिलेशन अछि मते को if the ITCZ moved back to the ocean the monsoon would retreat हे जेबो there is no just break पूरा एंडी लागि जेबो हैला नेक्स्ट मते को pre monsoon rainfall in West Bengal is locally known as
प्री मॉनसून रेनफॉल जते बेले वेस्ट आपनकर बेंगल रे आसे ताहाले ताको हमें कोन कहि परिबा क्विक टी शावर्स तमन को कहि दिली टी शावर्स आसिले चा गछ कोठी अछि आसाम रे चेरी ब्लूजम्स कहले तमन कहितिले कोठी कर्नाटक रे रिलेट करेबो कॉफी पई कर्नाटक रे आपण माने रिलेट करे परिबे काला बैसाखी हेले तमन कहितिली वेस्ट बेंगल प्लस ओडिशा कॉफी शावर्स हेले याको भी आपण माने रिलेट करे परिबे कोन कॉफी कोठी अछि कर्नाटक रे तो याको भी कर्नाटक केरला ए कोस्ट को आपण माने पळेबे होना नेक्स्ट मते को which force is responsible for the deflection of monsoon winds to the right in the northern hemisphere quick कौन हबो राइट आंसर कौन हबो deflection of monsoon winds कौन हबो deflection of monsoon winds जोटा हमें जानि छे कोन देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कहले हमें जानि छे ये एयर को पुल करे कोडे ना ये पुल करिबो एयर को it pulls air to downward जदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें कहूचे ये आपनकर कोन करिवो ना एक्ट करिवो आउटवर्ड फ्रॉम ए सेंटर ऑफ रोटेशन सेंट्रीपेटल कहिले सेंट्रीफ्यूगल रो ऑपोजिट आपनकर कोन हबो ना सेंट्रीपेटल पेटल कहले पेट भीतर को पेटल माने पेट भीतर को ता माने भीतर आडू ये माने बाहर को ये सेंट्रीपेटल माने कोन कहबो ना एमिति आसीबो एरो मार्क भीतर को आपण मानकर रहिबो हैला जदी फ्यूगल कहबो ताहाले सर्कल ले एरो मार्क आपनकर कोन ना बाहर को फ्रॉम द पॉइंट टू द आउटवर्ड हेले आपनकर सेंट्री फ्यूगल फोर्स हबो बट एठी सॉरी टिक मार देली कि एठी आपनकर कोन पचारिछि कोन व्हिच फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ monsoon डिफ्लेक्शन रे कोन हबो ना ये आपनकर अर्थ रोटेशन पई हुए एंड ये डिफ्लेक्ट करबो कोन ना मूविंग ऑब्जेक्ट माने जदी बुलु थांती टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू द लेफ्ट तो लेफ्ट राइट हैला माने आपण माने ताकू कोठी की ना कोरियोलिस फोर्स को रिलेट करेबे सी ना सॉरी ए ना सी कोरियोलिस फोर्स थे आपनकर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मूव हबो साउथ वेस्ट मॉनसून हमर लाइक वन से तबे क्रॉस कर जाय इक्वेटर को तापर एटा आपनकर स्टार्ट हे जाय हैला नेक्स्ट द Somali current is a what that affects the charged particles and compasses not atmospheric wind pattern कौन कौन हमें रिलेट करे परिबा मते के कहि परिबो सोमाली करंट जते बेले कहूची आपण माने रिलेट करिवे का सहित one current that weakness the monsoon eta हे परिबो कि one current actually this is a cold current during the summer so one current केबे आसे now this is the cold current during summer होना नहीं मते को cold current moisture को हमें कौन कहि परिबा while we know this is कोन cold but cold current usually reduce करे moisture carrying capacity को deep sea जदि हमको कहला deep sea trench ताहाले हमें जानि छे Somali basin exist करे deep sea trench रे but the Somali current refers to the water movement but seasonal surface current को हमें relate करे परिबा this is unique because it reverse in direction with the season तो Somali current हबो कोन ना seasonal surface current of the coast of Africa that means या मनकर seasonal current को कोन circulate करिवो clear एतिक जिंस B हबने D B नहीं D हैला during the summer season आपनकर north east ru flow हेकी coast of Africa पर्यंत north east along with the coast of Africa driven by the monsoon winds okay and yeah associate करिबा का से the upwelling of the cold water सहित next मते को El Nino literally means El Nino माने literally कोन थाई quick हां D El Nino कहले कोन बुझ देखो जैंट एंती किछ ऑप्शन न थाई बट El Nino B अछि कोन अछि ना क्रीस्ट चाइल्ड कोन अछि ना द क्रीस्ट चाइल्ड को हम रिलेट करे परिबा की कोथि पई बिकॉज़ पेरुवियन फिशरमैन मन को जदि हम रिलेट करो छे they named the phenomenon कोन ना El Nino because why because of the warm current usually appeared around the Christmas सेथि लागि ताकु से कोन
ना क्रिस्ट चाइल्ड सहित ताको रिलेट कर दिया जायछि क्लियर बी हां तार माने एलनिनो तो आपण माने समस्या जानछन बट स्टार्टिंग एटा रिलेट कहा सहित वर्ड कोठो आसी छि एटा भी जान ठीक अछि नेक्स्ट चलो मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन anthropogenic factor affecting Indian climate देखो anthropogenic जते बेले कहूची that is what not natural this is total आपण कर कोन ना human made or human interference जोटा हेई थाए ताको हमें कहूचे anthropogenic तो anthropogenic factor माने हमें कहा को रिलेट करै परिबा volcanic eruption this is a natural geological factor हमें रिलेट करैबा आपनकर axial tilt of the earth this is also natural आपनकर solar flares this is also natural but जो deforestation in the western Ghats deforestation आपनकर हुए हां deforestation हेले एटा आपनकर artificial हेई था human intervention रे हेई था हो ना तो ताको हम रिलेट करै परिबा next कहछि the winter monsoon is generally dry in India because winter रे monsoon आपनकर generally dry थाए कोथि पय मते के कहि परिबो sea to land हेले इ आपनकर कोन ना wet condition को बुझेबो जते बेले from sea to land कहूची ताहाले हमें जानुछे इ आपनकर wet conditions को बुझौची जते बेले उल्टा हे जिवो land to sea हे जिवो that means आपनकर dry winter during the winter winds आपनकर blow from the high pressure center to the low to the central Asia or the Siberian toward the sea that means एते बेले आपनकर create हुए हां ना नहीं एते के जिंस बुझा पडुची ना नहीं too cold too hot एबिति हमन too cold हैला too hot हेले आपण माने हिमालयन रीजन या फिर आपण माने राजस्थान को पड़े क्लियर नेक्स्ट चलो मते को which mountain range acts as a barrier for the Bay of Bengal branch of the monsoon forcing it to turn toward the Ganga valley तो गंगा वैली एडकू टर्न करबा पई फोर्स करे द बैरियर्स ऑफ द बे ऑफ बेंगल ब्रांच कोन हबो अरावली आपनकर अरेबियन सी रो ब्रांच एठी आपन को कोन पचारछि बे ऑफ बेंगल कथा अरावली आपनकर कोठी की अरेबियन ये आपनकर अरेबियन सी सहित हम रिलेट करि परिबा हिमालयस एंड अरकान को हम रिलेट करि परिबा बिकॉज़ अरकान माउंटेन हिला हिमालयस हला ए माने ही आपनकर बे ऑफ बेंगल ला ब्रांच रे जिबे जो माने की कोन ना तांको हिल माउंटेन रो आपनकर फोर्स करिकि रिफ्लेक्ट करिकि वेस्टवर्ड एयर वेस्टवर्ड वाटर आपनकर मानसून को आनी की ट्रैवलिंग ऑफ करिकि गंगा वैली रे पकांती हैला नेक्स्ट मते को द IMD द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज द नॉर्मल रेनफॉल बेसलाइन तो नॉर्मल रेनफॉल बेसलाइन भाबे रे कहा को यूज करे जल्दी किए दबे यार आंसर 10 years average this is very short this is really too short to account for any decidual climate variability so at least kete 50 years average the IMD uses the long period average that कमे LPA बोली कहूचे जोटा कि आपनकर प्रेजेंटली 1971 रो 2000 पर्यंत गोटे थिला 1971 रो 2000 देन 2000 ऑनवर्ड्स आपनकर गोटे चलछि तो 50 years average LPA बोली ताकू कहसे हैला बुझा पड़िला ना नहीं बुझा पड़ला यस 50 ईयर आपनकर ऑन एंड एवरेज कहजिबो तो अगेन कहूची जदि आपण माने टीचिंग एग्जामिनेशन टाइम प्रिपरेशन करूछंती एसएसबी टीजीटी जॉइन करि परिबो वन ईयर वैलिडिटी सहित 1499 ने द्रोणो बैच जेटीएटी पई वन ईयर वैलिडिटी सहित 1199 संस्कृत एसएसबी टीजीटी सहित वन ईयर वैलिडिटी सहित 1499 हियर इज द हेल्पलाइन नंबर 82803282853285 को कॉल करी कि जॉइन हेई परिबे वन डे एग्जामिनेशन पे जदि प्रिपरेशन करूछंती 2 इयर्स वैलिडिटी सहित महापैक जॉइन करिवे 4000 रे एंड 4000 भीतर सब एग्जामिनेशन आपनकर कवर अप हेजिबो 2 इयर्स भीतर जत्ते वन डे एग्जामिनेशन आसीबो दैट्स इट क्लास रो पीडीएफ आपण माने वेदांग टीचिंग चैनल रे टेलीग्राम रे जाके जॉइन हे जानतु सेठी आपण माने क्लास रो पीडीएफ पाई जिबे और किछि क्वेरीज अछि किछि चाहूचो को टाइप रो क्लास आनिबा पई एनीथिंग वी कैन डिस्कस वी हैव टाइम तो डिस्कस करि पारे को हाँ प्रियव्रत सरीगला न्यू को माने अच्छा क्लास को लाइक करनो डू लाइक एंड जो माने पर्यंत सब्सक्राइब करिनो सब्सक्राइब आवर टीचिंग चैनल तमानकर किछि क्वेरीज नाही आई थिंक सो आई कैन वाइंड अप द सेशन नाउ
Thank you so much, guys. Thank you so much. Have a good day. Take care of yourself. But first of all, do prioritize your parents. This will be your first priority. No one else in the world. Thank you so much. देखा हबो केबे ना राति क्लास रे पुनी पीवाईक्यू सेशन चली आपनकर रातिर तो राति क्लास रे आपनकर देखा हबो ओके सीजीएल बेस्ड पीवाईक्यू सेशन चलची आज लास्ट अछि जोडा कि 2025 मसिया जो क्वेश्चंस पडिथिला सेही अकॉर्डिंग माने सेही क्वेश्चंस गुडा को हम डिस्कस करूछे तापर तो माने जानि देबा लेवल ऑफ क्वेश्चंस ओडिसा जीके रु कोन आसुची सो दैट हमें प्रिपेयर करिबा ओके से क्लाइमेट ऊपर टिके आनो क्लाइमेट ऊपर एलिना क्लास टाइमिंग तमरा 9 टा रु 10 टा रहउची सब मंगलवार गुरुवार और शनिवार हैला बस ए 3 दिन मु क्लास नो छा थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू बाय बाय टेक केयर